Hello everyone, this is free NAATI Hindi class provided by CECA. My name is Shipra and I'll be the trainer for today. And before we start the class with free NAATI Hindi, I wanted to draw your attention towards other free services that is provided by CECA. We have a free PT class along with free IELTS class. We do all kind of migration advice and also student visa for US, UK, Canada, and New Zealand. We also give free student visa extension and also free education advice. So if any of you are interested in any of these services, you can definitely give CECA a call and they will be able to help you with that. Alternatively, you can also like our Facebook page to keep to stay updated regarding all the new things that's coming up in terms of migration and in terms of PR pathways and also for other free services that CECA provides. Okay, for now, let's start with our NAATI Hindi. Okay. Okay, so this is the NAATI CCL website. So Akash, do you have any idea about NAATI CCL? Yeah, I've heard a couple of things, like it's the dialogues and all. Okay. So basically the structure, I'm familiar with the structure. Okay, that's cool. Yeah, and I think that's it for now, to be honest. Yeah. Okay. So have you ever visited this website? I mean, of course, because you booked your test. So I guess you know about this website. So I would just start with the brief introduction of what this website is about. So what they are mentioning here is first, what is going to be your test format and what topics that are included in your NAATI CCL and how are you going to be assessed in your test and what is the passing marks. Okay, so these are the main components on this website. So starting with your test format, now there are proctored exam that happens in NAATI CCL. So what it means that most of your exam would be under your control. You will be doing a lot of things, but there will be a proctor or a person monitoring what you're actually doing. So there'll be cameras set up that will monitor your activities. Okay. Yeah. Next is you'll have 2 dialogues in your exam. It could be based on 2 different topics or it could be based on any one topic as well. Okay. That's different, but you get 2 dialogues in your exam and each dialogue will be about 300 words. Okay. That's the max they will go, but can be anywhere up to 300. Okay. Yeah. And in each dialogues you have segments. What are the segments? Segments are basically like one person talks for like about one thing. That is your one segment. So it will go Hindi segment, English segment, Hindi segment, English segment alternatively. Okay. Next, these are the technology requirements that you need to have while doing your test. So I think you can go and check that out. Let's move on to the topics that are covered by NAATI CCL. So there are many topics that comes under these topics. So these are the major headings. Under these are various subheadings. For example, if you're talking about immigration, then you'll get a lot of visas. You can get partner visa, student visa, or tourist visa. So all different kinds of visa, or migrating to Australia, citizenship requirements. All of this will come under immigration. So there are some topics to it. Housing, very common. Like I've seen a lot of questions that have come on housing, out of which the most common is a lease agreement or a rental lease. Okay. That comes under housing. So all these different topics have like a lot of vocabs that is associated with it. So what CCA will do, we will do is like send you the vocab list. Okay.
and you go through those vocab, and I think you don't need anything apart from this. Okay. Okay. Now, a lot of students want to do their best in like do a lot of vocabs which is not there in your syllabus. You can do it if you have a lot of time. Just get as much information as you want. But if you have limited amount of time, especially for you, Akash, because you said your exam is in 1 month, I Yeah. would suggest you to stick to the list that is given to you and don't look any further, because you will not get anything apart from that. Okay. 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 Very rare case, maybe 1 or 2 words here and there you can get it, but that's easily manageable. That we'll go through when we are practicing. Okay. Yeah. All right. Next is how the test is assessed. What basically gives you points? Or rather, in case of NAATI, what basically gets you to deduct the point, gets the invigilator to deduct the point. Now, there is something called as language quality. That means your competency level in both English and language other than English. In your case would be Hindi. Okay. Yeah. So the grammar, the way you speak, everything will be considered in this. So a lot of students also think that, oh, this is NAATI, so I need to focus only on Hindi. It's not like that. Both the segments are equally important, and you need to convey the meaning properly in English as well as in Hindi. Okay. Okay. And further to this, language register is basically language formality with which a candidate transfers the meaning. You always have to think that you are in a professional scenario where you are transferring the correct meaning, not distorting it, and easily understandable to the other person. Okay. Yeah. Now, marks are deducted for errors. So there is a deductive marking system that happens here. So for each dialogue, you're allotted 45 points. And as you make mistakes, so for each mistake that you make, you miss your points. Okay. So first one is accuracy. That is basically, let's say if you have a 10-digit mobile number and you missed out on 1 digit, not missed out, you gave it incorrect. That refers to accuracy. Okay. Next is distortion. That means you have completely misrepresented the meaning of what was there in the audio or in the segment. That usually happens when sometimes what we say in English differs than what actually it means in Hindi. Okay. Yeah. So we might be using some different kind of words. Okay. For example, let's say, like going for good. Going for good actually means going forever. But if you interpret Yeah. that word by word, it means achhe ke liye chala gaya, right? Yeah. So that is misrepresenting the meaning when you're exactly like interpreting each and every word, but it's still not giving the meaning. So you'll miss points for that. Next is omission. Again, taking the example of a 10-digit mobile number. Out of 10 digit, you only said 9 and you missed out on 1 digit. Then again, you will miss points. Next is insertions. Insertions are basically when you're giving complete information but adding something from your side. Again, mobile digit, 10 instead of 10, you have given 11 digits. Yeah. So even though the 10 are correct, you'll still miss the point for that extra information that you have added from your side. Now, a common question is, how much points are you going to miss for all these mistakes? So everything depends on what kind of effect is it having on your segment. Okay. For example, even if you're missing a long words, but it doesn't have a lot of effect on the segment, you'll not miss so much point. But let's say if there is something like not. If you add not or remove not, it completely changes the meaning. It's exactly opposite, right? So that will have a great effect on your information. So that's how you'll miss points. So it's very important to understand the information rather than just aiming to interpret as many words as you can. Okay. Yeah. Next is, what are the scores of points
there to pass the exam. So there are two parameters or two criteria for you to pass this exam. The first one is getting at least 29 in each dialogue. So we have two dialogues, 45 each. So you have to at least get 29 in one, Okay. and more in probably the other one, because you also have another criteria, which is 63 out of 90. Okay? So it's not that if you get 29 in both, it's a fail, or if you get 20 in one, 45 in the other one, overall is 65, it's still a fail. So you have to clear both the criterias. Okay, marginal Okay. is 58 to 62.5, where you can appeal for a recheck. Okay, clear fail is less than 58. Okay, but Okay. I always say you don't have to worry about these two things. Only think about passing the test, because the passing rate is 99%. I mean, since I've been teaching with CECA for almost a year, Yeah. I've only seen one student failing and one student getting marginal score who put a review on it. Okay, but everyone else Okay. have cleared their test. Okay, Mhm. so if you put in effort, if you practice well, and if you go through the vocab, it's not a very difficult exam. People tend to complicate it a lot because, like, these days, no one talks in proper Hindi using every single word in Hindi, right? Yeah. So Yeah. that's where the problem creates, and people complicate this trying to use the best possible word in exam. But my Yeah. advice since the beginning is always focus on conveying the information, on giving someone the message that was there in the segment, rather than trying to use the best Hindi word and compromising on the information. Okay, Yeah. Yeah. right, so that was it for the page of the NAATI CCL. Do you have any questions? So far, so good. Okay. So now the structure of the class is basically we start with the vocab practice. So we'll be doing every day, we'll be doing different vocabs. Some vocabs are related to employment, some are related to immigration, business. So all the topics that you saw, we will be doing vocab topic wise. Okay. Okay. Yeah. So for today, we'll be starting with medical vocabulary. So we'll do half an hour, 40 minutes vocab practice. I will suggest you to write each and every word that we practice, especially a word that is unfamiliar to you, so that it stays in your mind. Especially अगर आपने कुछ गलती की है या आपके दिमाग में कोई और word था उस particular word के interpretation के लिए, then it's definitely much better if you write it down, then it stays in your mind better. Okay. For now, let's start with our medical vocab. Okay. If you know the word, then you can say it. So you just unmute yourself. I think Nivedita is pretty new as well. I think Nivedita's second class today. So both of you can try to interpret as many words as you can. If you don't know, then obviously I'll give you the answer for it. Okay, let's start with medical vocabulary. Heart को हम हिंदी में क्या कहते हैं? Heart. हृदय हृदय. या दिल. Yes, correct. And what is heart disease? दिल की बीमारी. Good. Heart attack. दिल का दौरा. Dil ka daura. Yes, correct. Very good. Okay. Next.
What is liver? जिगर, Jigar. Yes. Kidney. घुटना, Ghutna. Think about kidney again. किडनी, Kidney. सॉरी गुर्दा, Gurda. Yes. Kidney failure. किडनी का खराब होना, या फिर काम ना करना. Diagnosis. जांच, डायग्नोस करने के लिए हम जांच करते हैं. सो डायग्नोसिस हैज अ डिफरेंट मीनिंग. डायग्नोसिस मतलब बीमारी का पता लगाना या फिर निदान करना. ओके. तो निदान करने के लिए हम जांच करते हैं. तो वो होगा बीमारी का निदान करना. या फिर सिर्फ निदान करना या फिर बीमारी का पता लगाना. यस, एंड ऑल्सो बीमारी का निदान करना. या ओके. नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर. रक्तचाप, रक्तचाप. Yes, blood is रक्त, pressure is चाप. High blood pressure. उच्च रक्तचाप, Yes, उच्च रक्तचाप. Okay, hypotension. हाइपो या हाइपर, Hypo. कम रक्तचाप, नहीं, इसमें निम्न. निम्न रक्त, निम्न रक्तचाप. Gland. Gland. ग्रंथि, ग्रंथि. Thyroid. गल ग्रंथि या गले की ग्रंथि. ग्रंथि. Yes. Inflammation. सूजन, सूजन. Yes. Analgesic. पेट की बीमारी नहीं, पेट से रिलेटेड ही कुछ होता है. Okay. प्रॉपर वर्ड नहीं पता. आकाश, आपको पता है एनाल्जेसिक क्या होता है? नहीं. एनाल्जेसिक इज अ टाइप ऑफ पेन किलर. ठीक है. या तो उसे हिंदी में कहेंगे दर्द निवारक. दर्द निवारण. ओके. ओके. एंटी इंफ्लेमेटरी. सूजन को कम करने वाला, सूजन कम करने वाला या फिर सूजन रोधी दवाई. ओके. बैक्टीरिया. कीटाणु, कीटाणु. यस. मैं परमाणु बोलने वाली.
Okay, joints. जोड़. Jod. Yes. Depression. उदासीनता. Udashinta. Yes. Blood test. खून की जांच. खून की जांच. Yes. Red blood cells. लाल खून के सेल. Cells यानी कोशिकाएं. अच्छा. So red blood cells, लाल रक्त कोशिकाएं. Medical certificate. चिकित्सक प्रमाण पत्र. चिकित्सीय प्रमाण पत्र. Medical expenses. चिकित्सीय खर्चा. हाँ, चिकित्सीय खर्च या इलाज का खर्च. Specialist. विशेषज्ञ. विशेषज्ञ. Yes. Dietitian. पता नहीं. खान पान का विशेषज्ञ. Okay. आहार विशेषज्ञ. ओके. Balanced diet. पौष्टिक आहार. That's nutritious diet. Balanced यानी संतुलित आहार. ओके. संतुलित. Physiotherapist. पता नहीं. भौतिक चिकित्सक. Dentist. दांत का चिकित्सक. हाँ, दंत चिकित्सक या दांतों का डॉक्टर. Infection. संक्रमण. हाँ, संक्रमण. Yes. Infected. संक्रमित.
संक्रमित. Chronic disease. भयंकर बीमारी. Okay. Chronic मतलब लॉन्ग टाइम डिजीज, जो बहुत टाइम से चल रही है वो. तो पुरानी बीमारी या चीरकालिक बीमारी. ओके. मसल्स. कोशिकाएं. नहीं, मांसपेशियां. साइकोलॉजिस्ट. दिमाग का डॉक्टर. ओके. साइकोलॉजिस्ट को मनोवैज्ञानिक कहते हैं. साइकेट्रिस्ट दिमाग का डॉक्टर होता है, विच इज मनोचिकित्सक. फिर से बोलेंगे आप प्लीज. यस, साइकोलॉजिस्ट इज मनोवैज्ञानिक. साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक. हाइड्रोथेरेपी. पानी से इलाज. या फिर जल चिकित्सा. साइड इफेक्ट्स. दुष्प्रभाव. दुष्प्रभाव. यस. हेल्थ इश्यूज. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां. स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं या परेशानियां. मेडिकल अटेंशन. चिकित्सीय चिकित्सीय सहायता. सहायता. इम्यूनाइजेशन. टीकाकरण. टीकाकरण. यस. इमरजेंसी सर्विसेज. आपातकालीन सर्विसेज. आपातकालीन सेवाएं. हाँ. डिसइंफेक्टेंट. पता नहीं. डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक. एलर्जी. सिमिलर ही है हिंदी में एलर्जी.
Reaction. प्रति Mm-hmm. प्रति पता नहीं, Yes. Pratikriya. प्रतिक्रिया Arthritis. जोड़ों की बीमारी Okay, जोड़ों की बीमारी है, बट अर्थराइटिस का हिंदी में नाम है which is गठिया. Lethal. जानलेवा जानलेवा. Yes. Immune system. प्रतिरोधक क्षमता नहीं, इम्यूनिटी हुआ वो तो प्रतिरोधक प्रतिरक्षा प्रणाली. प्रतिरक्षा प्रणाली Sample. पता नहीं, नमूना. Treatment. इलाज 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 या उपचार. Appointment. नियुक्ति. मुक्ति Disorder. कुछ ठीक ना होना विकार. विकार Eating disorder. खाने का हाँ, विकार खाने का विकार. Aged care center. वैश्विक लोगों का केंद्र Aged care center. वृद्धाश्रम. वृद्धाश्रम
Prescription. दवाई की पर्ची. Trauma. सॉरी क्या? Trauma. घात. Okay. सदमा. Trauma यानी सदमा. Is sadma known as shock as well? Yes. Okay. Insomnia. ना. अनिद्रा. Whooping cough. क्या? सॉरी. Whooping cough. वूपिंग. हाँ, whooping cough. कफ तो खांसी होगी. वूपिंग कफ क्या होगा? काली खांसी. Medical condition. चिकित्सीय. चिकित्सीय स्थिति या चिकित्सीय अवस्था. Genetic disease. वांशिक बीमारी. आनुवांशिक. हाँ. Disability. विकलांगता. Let's. दिव्यांग बोल रहा है तो मैं कंफ्यूज हो गई थी. दिव्यांग बोलना है या विकलांग बोलना है? किसमें Disability, they are calling these days divyang, not viklang, because it is hurting the sentiment. So I was confused whether to say viklangta ya divyangta. I think it's still viklang. Okay. For this purpose. ना it's still विकलांग, क्योंकि हिंदी में भी अगर हिंदी के सेगमेंट में वो यूज कर रहे हैं, that means it's they're still considering that word. Okay. I don't have information जो आप बोल रहे हो. हाँ नहीं, normal जो conversation हो रहा है आजकल उसमें they are using divyang, especially able instead of disabled. Okay. Okay, let's practice some general vocabulary now.
Registration. Namankan. Namankan is nomination. Okay. Registration यानी पंजीकरण. System. पता नहीं. System यानी प्रणाली. प्रणाली. Procedure. प्रक्रिया. Prakriya. Yes. Experience. अनुभव. Yeah, अनुभव. Fees. फीस. फीस को हिंदी में हम कहेंगे शुल्क. Cooperate. साथ देना. Similar. सहयोग. सहयोग. Briefly. पता नहीं. Briefly यानी संक्षेप. Detailed information. विस्तार जानकारी. हाँ, विस्तृत जानकारी. Yes. Free services. निशुल्क सेवाएं. हाँ, निशुल्क सेवाएं. Yes, correct. Dependent. हाँ. निर्भर. 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 Yes. Interpreter.
मदद करना नहीं. इंटरप्रेटर यानी दुभाषी, जो आप नाटी सीसीएल में कर रहे हो. इंटरप्रेटिंग वन लैंग्वेज इनटू अदर लैंग्वेज. द्विभाषीय. दुभाषी, yes. और ये काफी कॉमन है. They use it in the first segment that since we have an interpreter with us now, Okay. we can communicate. ऐसा. Okay. Translation. अनुवाद. Anuvad, yes. Fortunately. सौभाग्य से. हाँ, सौभाग्यवश. Community. पता नहीं. Community यानी समुदाय. What is Indian community? भारतीय समुदाय. भारतीय समुदाय. Yes. Sufficient. पूर्ण. पूर्ण. पूर्ण is complete. हम्म. Sufficient यानी पर्याप्त. Date of birth. जन्म की तिथि या तारीख. हाँ, जन्म तिथि. Deadline. आखिरी तारीख. अंतिम तिथि या आखिरी तारीख. Yes. Advertisement. इश्तेहार या विज्ञापन. Gas leakage. गैस. गैस का. गैस का रिसाव. गैस गैस ही रहेगा. गैस का रिसाव.
Okay. Now, let's take 5 minutes break and then we'll start with dialogue practice. निवेदिता आपने इसके पहले कब क्लास ज्वाइन किया था? I'm a bit confused. मैंने बहुत पहले मतलब ऑलमोस्ट 6 या 7 मंथ पहले किया था. मैंने बुक नहीं किया था तब टेस्ट. Okay, अभी आपने बुक किया है टेस्ट? अभी डेट नहीं मिले मुझे. जब जैसे ही डेट मिलेंगे फिर कर दूंगी. मतलब एक वन आई विल बी बुकिंग इन नेक्स्ट 1 or 2 months. ओके, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमारे साथ निवेदिता कोई थी and that's why I got confused, but then I realized that it's not her. Okay, so आपने अभी तक एग्जाम बुक नहीं किया. एंड आकाश, आपका किस डेट को है एग्जाम? 17th of May. Okay. Okay. Nivedita, I think आपके पास already material होगा. आकाश, I'm just gonna give you my number. तो Okay. आप ये text कर सकते हैं. I'll send you all the materials that we have. ठीक है? Okay. Thank you. Okay. Yeah. Let's take 5 minutes break and then we'll start. Should I send you my email? Sorry. हाँ, आप इस पे WhatsApp message करो on this phone number. Okay. And मेरा I'll- WhatsApp is still on my South African number. Okay. That's Yeah, I'll do it from my Australian one as well. It's fine. Doesn't matter. okay. I'll do it. Thank you.
the water department regarding a new water connection. The dialogue begins now. Thanks for calling the water department. How may I help you today? Okay, Nivedita. जल विभाग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? Okay, good. Akash, आपके पास है? Sorry, I have to repeat what she said in Hindi. Yes, that's right. तो अगर आपके पास फुल आपको पता है कि क्या इंटरप्रेट करना है या उसका हिंदी में क्या होगा मीनिंग, तो यू कैन डू इट इन हिंदी, अदरवाइज ट्राई टू कंप्लीट द इंफॉर्मेशन जिसका आपको नहीं पता है. फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नो द हिंदी ऑफ वाटर डिपार्टमेंट, ठीक है? तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं वाटर डिपार्टमेंट में कॉल करने के लिए धन्यवाद. Okay. और अगर पता है देन डू इट प्रॉपर्ली. Okay. Okay. So do you have the information or not for this segment? I'll do it from the next segment now. I was confused here, sorry. Okay. नमस्कार, मैं अपने नए स्थान पर जल का कनेक्शन चालू करवाना चाहता हूं और इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेने के लिए ही फोन कर रहा हूं. Okay, Nivedita. So I needed a water connection in my new place. I called you regarding the for knowing the procedure of the same. Okay, yeah, good. Akash. Hello, I wanted a water connection at my new place and required some information about this. Yes, I'm calling to get information regarding the process. Okay, next. Sure. I will need a few of your personal details for this. Can I get your full name, the suburb where you live, and phone number, please? Okay, Akash. मेरा नाम आकाश है और मैं मेलबर्न में रहता हूँ. No. You don't I don't have to answer. No changes in the information from your side. Okay. Yes, you just जो भी बोला है उसने उसको बस हिंदी में एग्जैक्ट बोलना. Okay, sure. Okay, तो आपके पास है इंग्लिश में? मुझे थोड़ी जानकारी की जरूरत है. मुझे आपका नाम चाहिए और आपका नंबर चाहिए. ओके, और आपने मेलबर्न क्यों बोला था? सॉरी, आपने मेलबर्न बोला था ना पहले, देन मुझे आपका नाम चाहिए और कहाँ आप रहते हो और मुझे आपका नंबर भी चाहिए होगा. ओके, या गुड ट्राई. निवेदिता. बिल्कुल, उसके लिए मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए होगी. आपका नाम, पता और फोन नंबर चाहिए. यस, करेक्ट. पर्सनल डिटेल यानी निजी जानकारी. पर्सनल डिटेल था. हाँ. Sure, I would need some of your personal details. Full name, suburb, and phone number. Full name यानी पूरा नाम, suburb यानी उपनगर, and phone number यानी आप सेम भी बोल सकते हो, आपका फोन नंबर चाहिए होगा. अगर ये इंफॉर्मेशन मिस हो गई जैसे निजी जानकारी तो भी पॉइंट्स कटेंगे शिप्रा? वेरी लेस. बस जानकारी, निजी जानकारी एक वर्ड है, मे बी 0.2 और 0.5. ओके, नेक्स्ट. जी बिल्कुल, मेरा नाम राहुल शर्मा है. मैं ग्लेनवुड में रहता हूं और मेरा फोन नंबर है 0459684556. Thanks for that. ओके, निवेदिता. I missed the number, Shipra. Okay. Akash. Yes, indeed. My name is Rahul Sharma, and I live in Glenwood, and my number is. I missed the number as well, but I understood the number though, but I missed it. It was 045 and I missed it again. Okay, let me play it again. Okay.
ठीक है, क्या आप मुझे अपने कार्यालय का पता बता सकती हैं ताकि This. The process. You शुरू करना purposes. And when do you want to start? 9-6 Phone number, please. जी बिल्कुल, मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं ग्लेनवुड में रहता हूँ और मेरा फोन नंबर है 0459684556। Okay. Did you get it, Nivedita? Yes, I got it, Shikha. Okay. So what was the number? Or full segment rather? Okay. Sure. My name is Rahul Sharma. I live in Glenwood and my phone number is 0459688456. Yes, correct. 0459688456. Next segment. Thanks for that. Will this connection be for commercial or residential purposes? And when do you want to start the connection? यह मेरे Again, Nivedita. हाँ जी बिल्कुल, ये कनेक्शन आपको निजी काम के लिए घर के लिए चाहिए या कमर्शियल? ये कनेक्शन आप कब से शुरू करवाना चाहेंगे? Okay, good. Akash. Yes, of course. I mean, जी बिल्कुल। आप ये कनेक्शन आपको घर के लिए चाहिए या फिर कमर्शियल के लिए, और ये कब से शुरू करवाना चाहेंगे? Okay, information थी। First में उसने बोला था thanks for that. Okay. Not yes. धन्यवाद। यह आपके घर के लिए होगा या फिर व्यवसाय के लिए? व्यवसाय, okay. Next segment. घर के लिए होगा और मैं इसे यह मेरे घर के लिए होगा और मैं इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहूंगा। Akash. This will be for my home. This will be for my residential address, and I would like to start it immediately. Yeah. Next segment. It normally takes around 5 days to set up a new connection. But if you want to speed up the process, you will have to come to our office with all the relevant documents. ठीक है, Nivedita. Normally, just a moment, Shikha. इस प्रक्रिया के लिए 5 दिन लगते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को तेजी से करना चाहते हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। Okay. रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। आकाश आपके पास है? वैसे तो इस सर्विस को शुरू करने में 5 दिन लगते हैं, पर अगर आपको जल्दी करवाना है तो आपको हमारे ऑफिस में आके सारे कागज सबमिट करने पड़ेंगे। Okay, let's hear it again. कनेक्शन चालू हो। ठीक है, मैं वहां Yes, the address is 20 documents. It normally takes around 5 days to set up a new connection. But if you want to speed up the process, you will have to come to our office with all the relevant documents. Okay, इस सेंस में सारे जरूरी कागजात के साथ हमारे दफ्तर आना होगा या फिर इससे जुड़े हुए, रेलेवेंट मींस इससे जुड़े हुए, ठीक है। पर यहाँ पे अगर जरूरी कागजात भी बोलेंगे तो इट वोंट बी इनकरेक्ट। तो सारे कागजात लेकर हमारे दफ्तर आना होगा। Okay. Next segment. ठीक है, क्या आप मुझे अपने कार्यालय का पता बता सकती हैं ताकि मैं वहां जा सकूं? Akash. Okay, can you tell me the address so that I can go there? Okay. Nivedita. ठीक है, क्या आप अपने
ऑफिस का एड्रेस मुझसे शेयर कर सकती हैं ताकि मैं उधर जा सकूं? ओके, अब इंग्लिश में कर दो। इंग्लिश में करना था। Sorry. Okay, can you please share the address of the office so that I can go there? Yeah, correct. Next segment. Yes, the address is 25A Deacon Street, Glenwood. Please note that the office opens at 9 in the morning and closes at 5 p.m. Okay, Nivedita. मैंने स्टार्टिंग का कुछ मिस किया शिप्रा. I'll do the next one. Okay, आकाश आपके पास है? हाँ जी, पता है 25A डीकन स्ट्रीट ग्लेनवुड और दफ्तर 9 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक खुला होता है. Okay, good, very good. छोटा सा बस मिस था. Please note, यानी कृपया ध्यान रखिए. Yeah, that one I didn't. Yeah, कृपया ध्यान रखिए. Yes. Okay, thank you. Okay, next segment. ठीक है, मैं वहां आज ही जा रहा हूं और मुझे साथ में कौन-कौन से दस्तावेज ले जाने होंगे और क्या इसका कोई शुल्क भी लगेगा? Okay, Akansha. Sure, I will go there today. What are the documents will be needed, and do I need to pay any fees? Yes, correct. Akash. Okay, I will go there today itself. Could you please tell me if any documents, any fees will be required and what documents I will need to take? Okay. थोड़ा इधर उधर हो गया. Information थी आपके पास, but segments, I mean sentences आगे पीछे हो गए थे. Okay. Information शायद पहले था before the Yes. documents. वाली चीज पहली थी, बाद में फीस वाली चीज. Yeah. Okay. Next segment. You will have to bring your passport or any other ID proof with your address and your social security number. You will also have to pay $75 for this. ठीक है. Okay, Akash. आपको अपना पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा और सोशल सिक्योरिटी नंबर. इसके साथ आपको $75 की फीस भी देनी पड़ेगी. Okay. Nivedita. इस प्रक्रिया के लिए आपको अपना पासपोर्ट या कोई और आईडी प्रूफ लाना पड़ेगा, जिसके लिए आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर लगेगा. इस प्रक्रिया के लिए आपको $75 का शुल्क चुकाना पड़ेगा. Okay. Yes. आपको अपना पासपोर्ट या कोई अन्य पहचान पत्र जिस पे आपका पता लिखा हो वो लाना होगा, और साथ ही जिसमें सामाजिक सुरक्षा क्रमांक भी लिखा हो. ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नंबर. सॉरी, सामाजिक सुरक्षा क्रमांक. नेक्स्ट सेगमेंट. तो इसके बाद क्या मेरा कनेक्शन चालू हो जाएगा? Okay, Nivedita. So will after this, will my connection begin? So my connection will start after this. Will start after. Okay. Next segment. All the work related to new connections is completed between Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. Once you pay and submit all the documents, your new connection will be connected within the next 5 days. ठीक है, और जब नया कनेक्शन लग रहा होगा. Sorry, could you play that one again? Okay. Nivedita, आपने before I play that again, Nivedita, आपके पास था information? हाँ, कुछ है. Okay, try.
कनेक्शन का कार्य 9 से 5 के बीच में मंडे से फ्राइडे तक होता है। जब आपका काम शुरू हो जाएगा उसके 5 दिन में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। Okay, let's hear it again. Almost सही था, but let's hear it again. और क्या इसका कोई शुल्क भी लगेगा? Any other ID pullers for this? ठीक है, तो इसके बाद क्या मेरा कनेक्शन चालू हो जाएगा? All the work related to new connections is completed between Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m. Once you pay and submit all the documents, your new connection will be connected within the next 5 days. Okay, Akash. सारे नए कनेक्शंस का काम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होता है, सोमवार और शुक्रवार के बीच में। अगर आप सारी फी अभी पे कर देंगे और सारे कागज सबमिट कर देंगे तो आपका कनेक्शन 5 दिन में शुरू हो जाएगा। Okay. Yes, once you pay and submit the documents, एक बार आप शुल्क भर दें और सारे कागजात जमा करवा दें तो आपका कनेक्शन 5 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। और 9 से 4 था, 9 से 5 नहीं। Oh, okay. Okay. Next segment. ठीक है, और जब नया कनेक्शन लग रहा होगा तो क्या मेरा घर पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा? अगर मैं घर पर ना हुआ तो क्या होगा? Nivedita. Okay, while the connection is going on, is it required for me to be at home? And if I'm not at home, what will happen? Yeah, correct. Yes. Next segment. No, you will not be required to be at home. However, you will have to make sure that all the appliances connected to the water are turned off while the new connection is being set up. Akash. नहीं, आपको घर पे नहीं होना पड़ेगा। I don't know how to say, just make sure. कृपया ध्यान रखिए या फिर हाँ, ये सुनिश्चित करिए। कृपया ध्यान रखिए कि पानी से जुड़े सारे अप्लायंसेस बंद होने चाहिए जब नया कनेक्शन लग रहा होगा। Okay, yes, very good try. Nivedita. जी बिल्कुल नहीं, आपको घर पर नहीं रहना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब कनेक्शन हो रहा है, पानी से संबंधी सभी अप्लायंसेस बंद हो। अप्लायंसेस को हिंदी में उपकरण कहते हैं। उपकरण, पानी से जुड़े हुए सारे उपकरण बंद हो। ठीक है, मैं समझ गया। सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, Akash. Okay, I understood. Thank you very much for all the information. Yeah. End of dialogue. Okay. So how was your first dialogue, Akash? It was fine. Not as bad as I thought, but I just need to go through the vocab clearly. Yeah. And you did good for first day. So I think definitely you can clear your test in 1 month. Okay. Thank you. Okay. So now we'll do another dialogue. So one more dialogue. Okay. Playing it now. Dialogue 1. This is a dialogue between Mr. Lalit, a Hindi-speaking client, and Jason, a probation and parole officer. Jason is explaining a community service order served on Mr. Lalit. The dialogue begins now.
Thank you for coming in, Mr. Lalit. My name is Jason, and I am the case manager of your community service order. Nivedita. यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद ललित। मैं आपका केस ऑफिसर का प्रॉपर नहीं पता है ट्रांसलेशन शिप्रा। मैं आपका केस ऑफिसर हूँ कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, सामुदायिक सेवाओं के लिए। Okay. थोड़ा सा मिसिंग है। आकाश, आपके पास है इंफॉर्मेशन? यहाँ आने के लिए शुक्रिया ललित। मेरा नाम जेसन है और मैं आपका केस मेरा नाम जेसन है और इंग्लिश में बोलो, एटलीस्ट इंफॉर्मेशन कंप्लीट करो। he said अच्छा मेरा नाम जेसन है और what was the word case? ऑफिसर। हाँ, मेरा नाम जेसन है और आपके कम्युनिटी सर्विस ऑर्डर का केस मैनेजर हूँ मैं। Okay, yes, very good. Information was complete. केस यानी मामला, ठीक है। मैनेजर यानी प्रबंधक, ओके। कम्युनिटी आज हमने वोकैब में प्रैक्टिस किया था। समुदाय, सर्विस यानी सेवा, ऑर्डर आदेश, यानी आपकी समुदाय सेवा आदेश का मामला प्रबंधक हूं, ओके। सो यहाँ आने के लिए धन्यवाद ललित जी। मेरा नाम जेसन है और मैं आपके समुदाय सेवा आदेश मामले का प्रबंधक हूँ। नेक्स्ट सेगमेंट। नमस्ते श्रीमान, मैं बहुत खुश हूँ कि जज ने मुझे जेल नहीं भेजा, बल्कि मेरी गुंडागर्दी के लिए सजा के तौर पर मुझे समाज सेवा करने के लिए कहा। समाज सेवा आदेश क्या है? निवेदिता। Hello Jason. I want to thank judge for not sending me to the jail for the crime I have committed, instead sending me for a social service. What will be my social service order? Last थोड़ा गड़बड़ था, but most of the information you had it. आकाश। Thank you, Jason. I would like to thank the judge for not sending me to jail for the offenses I've committed, but instead giving me a community service order. What will be my community service? He's just asking what is community service order. Oh, what is community service? What is community service order in general? और पहले में उसने thank you नहीं बोला था, उसने बस बोला था hello नमस्ते जी, यानी hello mister. Okay. I would like to thank the judge for not sending me to the jail for the offense that I did. Yeah. Instead, he asked me to do community service as a punishment. What is this community service order? Okay. Next segment. A community service order is a court order served on lawbreakers to repay the community by performing unpaid work. For your offense, the court issued an order for you to work for 400 hours. Can you play that again, please, Shubha? Okay. Before that, निवेदिता, आपके पास है कुछ? और कुछ है, लेकिन टूटा फूटा है। Let me repeat it. Unpaid order community service. A community service order is a court order served on lawbreakers to repay the community by performing unpaid work. For your offense, the court issued an order for you to work for 400 hours. Okay. Akash. समुदाय सेवा
What's order again, Shipra? आदेश. समुदाय सेवा आदेश वो होता है जहाँ पे लॉ ब्रेकर्स बिना पैसों के काम करते हैं. आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 400 घंटे का काम करना है. Okay, almost correct. Nivedita. समुदाय सेवा आदेश कोर्ट न्यायालय से दिया हुआ आदेश होता है जिसके तहत नियम तोड़ने वालों को अपने समुदाय को वापस, आई डोंट नो द रीपे, प्रॉपर ट्रांसलेशन ऑफ रीपे, वापस पैसे देने के लिए निशुल्क काम करना होता है. आपको 400 घंटे निशुल्क काम करने का दंड मिला है. Am I right? Was I right? Okay, first segment ऐसा था. Community service order is a court order that is served on law breakers. यानी समाज सेवा आदेश या फिर समुदाय सेवा आदेश एक ऐसा कानूनी आदेश है या फिर न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है जो कि कानून तोड़ने वालों पर लागू होता है. ठीक है. In this order, you repay the community. Repay को या फिर ऐसे बोल सकते हो वापस चुकाना पड़ता है या समुदाय को भुगतान करना पड़ता है बिना वेतन वाला काम करके. Okay. In your offense, court has ordered you to do 400 hours of community service. आपके मामले में या आपके अपराध में न्यायालय ने आपको 400 घंटे समाज सेवा करने का आदेश दिया है. Okay. Next segment. कोई बात नहीं, मैं अदालत के आदेश का पालन करूंगा. क्या मैं समाज सेवा के लिए शनिवार या रविवार चुन सकता हूं? क्योंकि मैं सोमवार से शुक्रवार तक काम करता हूं. Akash. No problem. I will follow the court's orders. Can I request to do my service on Saturday or Sunday because I work from Monday to Friday? Yeah. Since you live in Bankstown, we have found a workplace for you in the same area. But it's closed on weekends, so you have no other options than taking leave to complete the hours. Nivedita. क्योंकि आप बैंक्सटाउन में रहते हो, हमने वहां पे एक समुदाय सेवा केंद्र निर्धारित किया है. वो केंद्र शनिवार और रविवार को खुला नहीं होता है, इसीलिए आपको अपने काम से छुट्टी लेकर ये काम करना पड़ेगा. Okay. Akash. क्योंकि आप बैंकस्टाउन में रहते हो, हमने आपके लिए एक समुदाय सेवा की जगह ढूंढी है. वो शनिवार और शुक्रवार को बंद होता है, सो आपके पास कोई और चारा नहीं है पर काम से लीव लेके घंटे पूरे करने पड़ेंगे. I think. Yes. To complete the hours. चूंकि आप बैंक्सटाउन में रहते हैं, इसलिए हमने आपका कार्यस्थल उसी क्षेत्र में ढूंढा है. In this area. ठीक है. Okay. क्योंकि सप्ताहांत में खुला नहीं रहता, इसलिए आपके पास काम से छुट्टी लेकर घंटे पूरे करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है. ओके. ऑप्शन यानी विकल्प, एरिया यानी क्षेत्र, वीकेंड को हम सप्ताहांत बोल सकते हैं
या फिर आप शनिवार रविवार भी बोल सकते हैं. ठीक है. Okay. Next segment. फिर तो मुझे उसका पालन करना ही होगा क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है. क्या मैं अगले हफ्ते से शुरू कर सकता हूँ? Okay, Akash. That means I will have to respect that because I have no other option. Can I start from next week? Yes, perfect. Next. Yes. You need to work there every Friday until you have finished your 400-hour order. Before we move on to the next part of this discussion, do you have any questions? Nivedita. हाँ बिल्कुल. आपको हर शुक्रवार जब तक काम करना पड़ेगा जब तक आपके 400 घंटे पूरे नहीं हो जाते. यह कदम करने से पहले आपका कोई सवाल है? थोड़ा ओपन हो गया. यह कदम वाला थोड़ा गड़बड़ था. Okay. आकाश. हाँ बिल्कुल. आपको हर शुक्रवार काम करना पड़ेगा जब तक आपके 400 घंटे पूरे नहीं हो जाते. आगे बढ़ने से पहले क्या आपके पास कोई सवाल हैं? इस बातचीत में आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. ओके. इस बात. नेक्स्ट सेगमेंट. नहीं, पर मेरी पीठ में तकलीफ है इसलिए मैं ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं कर सकता. मेरे पास डॉक्टरी प्रमाण पत्र भी है पर मैं आज नहीं लाया. क्या मैं आपको अगली बार दे सकता हूँ? ओके. निवेदिता. No, I don't have any questions, but I have a health issue of stomach pain. I can't do much physical work. I have a medical certificate to prove that, but I didn't get it this time. Can I give it to you next time? Okay. Akash. No. I suffer from some back issues. So, and I have a doctor's certificate to prove that. I did not get it this time, so can I bring it next time? Yeah. Yeah. Was it back pain or stomach pain, Back Shikra? pain. Back Oh, pain. sorry. So I can't do any hard work. I have a medical certificate for it, which I did not bring today. Can I give it next time? Next segment. Actually, you will be working in a charity clothing outlet, attaching price tags to clothes, putting the clothes on the shelves, and helping with cleaning in the store. Basically, nothing strenuous. Okay, Nivedita. असल में आप चैरिटी कपड़ों के दुकान पर काम करोगे जहां आपका काम कपड़े रखना, उनके ऊपर पैसों का दाम लगाना और वहां की सफाई करना होगा. कुछ उसमें ज्यादा मेहनती काम नहीं होगा. स्ट्रेनर्स, ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रेनर्स. मेहनती काम नहीं होगा. हाँ, ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं होगा. ओके. आकाश. आप just a second, I've written it. दरअसल आप चैरिटी कपड़े के दुकान में काम करोगे और आपका काम होगा वहाँ के कपड़ों पे कपड़े रखना और कपड़ों पे प्राइस टैग लगाना और वहाँ की सफाई करना. ये ज्यादा मेहनती काम नहीं होगा. Yes. How do you say price tag? टैग ही रहेगा. ओके. टैग का हिंदी इंटरप्रिटेशन नहीं है. Okay. ठीक है. प्राइस टैग यानी कीमतों का टैग लगाना. कीमतों का टैग. Okay.
What is charity in? दान. हाँ. So we can say दान कपड़ों के दुकान में. दान वाले कपड़ों की दुकान में आपको काम करना होगा, जहाँ पे आप कीमत के टैग लगाएंगे. आपको कपड़े शेल्फ पे रखने हैं, साफ सफाई करनी है. तो ज्यादा मेहनती वाला काम नहीं है. हाँ, जो कि ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है. नेक्स्ट सेगमेंट. यह अच्छा है. मैंने पहले भी एक सुपर बाजार में काम किया है, इसलिए मुझे इस तरह का काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. यह ठीक रहेगा, बस मुझे जेल ना जाना पड़े. आकाश. This is nice. I have worked at a supermarket before. So I have worked at a supermarket before. So I missed what he said there. And then at the end he said, as long as I don't have to go to jail. Okay, yeah. Good try. Nivedita. That's good. I had worked in supermarket before. I should not have any problem in doing such work as long as I don't have to go to jail. Yes, perfect. आपका sentence miss था ये आकाश, that I should not have any problem in doing this work. Yeah. Got it. Next segment. That's great, Mr. Lalit. Now, could you please wait here? I will need to get some paperwork for you to sign. कोई बात. Okay. Nivedita. बहुत बढ़िया ललित जी. आप क्या यहाँ कुछ देर के लिए रुक सकते हैं? आपको कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे. Okay. आकाश. ये अच्छा है ललित जी. आप कुछ देर यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ कागजात or paperwork. I will get some paperwork for you to sign. यानी मैं कुछ कागजात पे दस्तखत करने पड़ेंगे. कुछ कागजात. आप कुछ देर यहाँ रुक सकते हैं, मुझे कुछ कागजात पे आपके दस्तखत चाहिए. Something like that. मैं कुछ कागजात ले आता हूँ जिन पर आपके दस्तखत चाहिए होंगे. Okay. Next. बात नहीं, आराम से करिए. For you to sign. कोई बात नहीं, आराम से करिए. Okay, Akash. No problem. Take your time. Yeah. End of dialogue. Okay, so that's it for today. Now I'm going to add you to the group, Akash. Okay. I'll do it right now, otherwise I tend to forget. Just give me 1 second.
Got it, Shipra. Yep. Thank you. Sent all the vocab list. Yeah, I just got it. Thank you. All good. So next class would be on Saturday from 12 to 3. Yeah. Okay. Yep. So see you guys next time then. Bye. Have a good evening. You too. See you soon. Good evening. Yep. Bye. Bye.